It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for Gate till date, with the best of the questions by best educators. with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack Gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate Gate challenge. Unacademy Combat. Register now. A very good evening to all my dear friends. Once again welcome to Unacademy और आपको अपने सेशन में 15 क्वेश्चंस फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग ये सेकेंड सेशन है। एक सेशन मैंने कल लिया था रिकॉर्डेड फॉर्म में और ये भी सेशन आपका रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा। कोई भी डाउट्स वगैरह रहेंगे किसी क्वेश्चन में वेदर इट इज यस्टरडे सेशन और दिस सेशन, सो दीज डाउट्स वी कैन डिस्कस इन टुमारो लाइव सेशन। ठीक है, तो कल सुबह सेशन है मेरा, तो वहाँ पे भी हम डाउट डिस्कस कर सकते हैं या जब भी आप लोग अगली बार लाइव मिलोगे यू गाइस कैन टेल। ओके, सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मैं हूँ आपका दोस्त ऐश्वर्य, पढ़ाता हूँ आपको गेट ईएससी के लिए। मेरा मास्टर्स आईआईटी दिल्ली से है, बीटेक जामिया मिलिया इस्लामिया से 4 बार मैंने गेट क्वालिफाई किया है विद माय बेस्ट AIR 226। 7 सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस और 2 सालों का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस भी है मेरे पास और ये सारे सब्जेक्ट्स मैं आपको करवाता हूँ on the various platforms of Unacademy. This is the code, my dear friend, which you guys can apply before going for any Unacademy Plus subscription. This is valid in Gate and ESC. Also, you guys can consider this code as a universal code at Unacademy. Universal code at Unacademy. Okay. So, any of your friends or relatives are interested in SSC, JEE, IT, JEE, CBSE, NEET, CAT, etc. So, you guys can always support and promote this code. Okay. Now the question comes, why do we need our plans? So plus में हम लोग आपको प्रोवाइड करवाते हैं डेली लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्सेज, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशंस। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में कोर्सेज और रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस आर आल्सो देयर। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द आइकॉनिक वन व्हिच इज द सुपरसेट ऑफ प्लस, वेयर वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू ईच एंड एवरी बेनिफिट ऑफ प्लस, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर आल्सो गोइंग टू गिव यू a personal coach who is going to plan your study, who is going to keep the study booster session for you,
who is going to analyze your test at the personalized level, who is going to prepare these personalized notes and practice sets. Not only this, you are also going to get the dedicated doubt clearing instructor. So whether it is a matter of plus or iconic, my dear friend, the code AISH10 is still valid. Is it clear? चलिए. So Unacademy, Gate and ESC में you guys can get your subscription now. As price hikes are coming soon, and if you simply want to beat this price hike, then for 10% off use the code AISH10. ना जल्दी रेट्स बढ़ जाएंगे. अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आप प्लान योर सब्सक्रिप्शन एज सुन एज पॉसिबल. और ये हमारे सब्सक्रिप्शन के करंट रेट्स. नो कॉस्ट EMI ऑप्शंस अवेलेबल. अच्छी बात ये है, और नो कॉस्ट EMI ऑप्शन में भी आप इंस्टेंट 10% ऑफ ले सकते हो ऑन 1.5 and 2 year प्रोग्राम. एंड सेम इज द स्टोरी विद आइकॉनिक. तो आइकॉनिक में भी आप लोग नो कॉस्ट EMI पे इंस्टेंट 10% ऑफ ले सकते हो. इज इट क्लियर? एंड यू कैन यूज द कोड AISH10. Arohan batch is there which started today morning only, and Dushyant sir ने किया है ये बैच को स्टार्ट. एंड सिमिलरली वर्क बैच इज देयर जिसमें दो सब्जेक्ट हम लोग चला रहे हैं, FM एंड जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग. ओके, तो ये स्टार्ट हुआ है 22 सितंबर को हो गया था. बट यहाँ पे कंटेंट कवर होता है सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज, वेयर एज आवर आरोहन बैच इज बाइलिंगुअल. इट इज इंग्लिश एज वेल एज हिंदी. Okay, so dear, for last 10 year questions of Gate, you can use the unlock code AISH10. So चलिए स्टार्ट करते हैं. Welcome to the session on 15 questions from the civil engineering part 2. तो ये दूसरा भाग है आपका. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक सेशन में ऑलरेडी कल ले चुका हूँ और आज है दूसरा. कोई भी डाउट्स होंगे तो हम अपने कल आने वाले लाइव सेशन में we will be discussing this. Okay, चलिए डियर. सो टोटल 15 क्वेश्चन है, और आप लोगों को क्या करना है, हर एक क्वेश्चन जैसे ही आपकी स्क्रीन पे आए तो आपने वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन पढ़ना है और उसको सॉल्व करना है. और सॉल्यूशन आता है तो मेरे आंसर से अपना आंसर मैच करना है, और अगर नहीं आता है तो मेरा प्रोसीजर, मैं हर एक क्वेश्चन के आगे प्रोसीजर लिख लाऊंगा, उससे देख समझ के करना है. ये भी समझ नहीं आता तो कल जब मैं लाइव आऊंगा तो मेरे से आपने पूछना है कि सर ये क्वेश्चन कैसे हुआ. ठीक है. A solid shaft is subjected to a bending moment of 3 kN per meter and twisting moment of 4.5 kN meter. If the allowable tensile and shear stress for shaft are limited to 330 MPa and 190 MPa respectively, then my dear friend, you guys have to tell me the minimum diameter, okay, of the shaft which will be able to resist this load. ठीक है. चलिए डाटा आपके पास है, मैंने भी अपना डाटा लिखा हुआ नोट्स में, तो आई विल बी यूजिंग दिस. ठीक है. सो फर्स्ट इज आपको दे रखी है दो चीजें, सिग्मा मैक्स 330 MPa एंड टाउ मैक्स 190 MPa. आई होप यू ऑल आर एग्रीइंग टू मी. ये डाटा आपको दे रखा है. ठीक है. Now if I am going to use the sigma max, combined bending का क्वेश्चन है ये डियर. So it is 16 upon pi d cube upon m plus under root of m square plus t square. If you are going to solve it, मैं डायरेक्ट लिखता रहूँगा, मैंने solved already कर रखा है डियर. So if you are going to solve it and going to put this value, वैल्यूज भी रख के दिखा देता हूं मैं. सो डियर, ये डायमीटर हो जाएगा आपके पास 50.63 mm. ओके. एंड द सेकंड इज टाउ मैक्स. इट इज सिंपली 16 upon pi d cube m square plus t square. और यहाँ से अगर आप d निकालते हो डियर, देन इट्स 52.53 mm. देखो डायरेक्ट स्ट्रेस बोल रहा है कि 50.6 का डायमीटर चाहिए, और टाउ मैक्स बोल रहा है कि एटलीस्ट यू नीड 52.33 diameter. So we have to tell the minimum value of the diameter which is safe.
So minimum value of diameter is going to be the safest among these two. So as per the direct it is 50 point something, and as per the shear it is 52 point something, and direct also 52.53 is going to work, because if you are going to put greater than 50 value here, then this value is less than 330 only, means you are going to be safe only. So whenever you have to select the minimum dia, then you have to do the maximum of the available calculations. Are you getting this? So you have to put here minimum dia is maximum of these two, and shear is the criteria to decide your minimum dia, and this is equal to option number D. This is equal to your option number D. Okay. तो सोम से था ये क्वेश्चन डियर, और कंबाइंड बेंडिंग कह सकते हो, कंबाइंड बेंडिंग वाज द टॉपिक. ओके. क्वेश्चन नंबर 2. The standard plasticity chart to classify fine grain soil is shown in the given figure. छोटा क्वेश्चन है, जल्दी से 5 सेकंड के लिए अपना वीडियो पॉज कीजिए और सुनिए. आपसे पूछा है कि व्हाट इज एक्स. ठीक है, एट्रोबैक क्लासिफिकेशन करते हैं हम लोग. सो दिस इज लो कंप्रेसिबिलिटी, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी, हाई कंप्रेसिबिलिटी. अपसाइड ऑफ दिस लाइन आर क्ले एंड लोअर साइड आर सिल्ट एंड ऑर्गेनिक क्ले. सो दीज आर द थिंग्स हियर. So the silt of low plasticity, clay of high plasticity. तो ऊपर वाला दोनों तो clay होगा और बीच में है तो intermediate होगा, तो ऑप्शन डी. Where is the question? It's option D. चलिए क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3, 15 में से 12 सबके ठीक चाहिए मेरे को. जो लोग फॉलो करते हैं 15 में से 12 सबके ठीक चाहिए. ओके. A simply supported rectangular beam, concrete beam of a span 5 meter has to be pre-stressed with a force of 1000 kilonewton dear, and the tendon is of parabolic profile which is having the non-zero eccentricity at the support. The beam has to carry an external UDL of 30 kilonewton per meter. Neglecting the self-weight of the beam, the maximum dip of the tendon at mid-span to balance the external load is. This you have to tell. Simply from the load balancing concept, you guys have to tell the answer. जल्दी से अपना वीडियो कीजिए पॉज और 4 सेकंड बाद और 10 सेकंड बाद इसको देखिए. So now what I'm doing, I'm going to use the load balancing concept, which is saying that WL square by 8 is nothing but 3 into E. So you have to find the central dip. You have to find the central dip here. Means E you have to find. So E is simply equal to WL square upon 8P. तो इसका मैं वैल्यू डायरेक्ट रख देता हूँ यहाँ से देख करके. तो दिस इज इक्वल टू 30 into 5 square, 8 into 1000. So it's coming to out to 0.09 meter, or it is 90 mm. But I do not know what. Yes, it's given in meter only. So option A is the right one. Option A is the right one, है ना. कैलकुलेशन कुछ होगा तो बताना, मैंने एक ही बार किया है अभी. आई कुडंट डबल चेक इट. अगर आपको लगता है कि किसी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक है, देन गाइस फील फ्री टू कांटेक्ट मी. ओके. चलिए नेक्स्ट इज फ्रॉम बीम सेक्शंस ऑफ प्लास्टिक एनालिसिस. आपको याद रखा एक सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन है which is laterally unsupported, and it says plastic modulus as 500. Okay, sorry, elastic modulus. Plastic is 650 and FD is 200. It is equal to 200. Okay, clear? So this is ये गलत है, गड़बड़ है कुछ. Just a minute, units are not matching. Units are not matching. कुछ गड़बड़ है इसमें डियर. Let me check. 1 मिनट वेट कीजिए, आप अटेम्प्ट कीजिए इतने में. Okay. Yes, it's a centimeter cube. Okay, it's centimeter cube here. Okay, it is centimeter cube only. ठीक है, आप कीजिए इसको सॉल्व. सेंटीमीटर क्यूब आएगा यहाँ. And now you guys can solve it.
So tell me the right answer dear. So it's MD. It's simple equal to beta, which is shape factor, you can say inverse of shape factor, into ZP into Fy over factor of safety, and ZP and ZP will cancel, so elastic section modulus and Fy upon gamma mo is nothing but the FD. Elastic section modulus is given to you, it's 500, and FD is also given to you dear. So FD is how much? Directly it is given to you 200, और इसका आएगा 10 की पावर 3 mm में, और ये आ जाएगा -6. यस, सो टोटल इट्स 100 किलो न्यूटन मीटर, और इट इज न्यूटन mm, or it is 100 kilonewton into meter. Okay, so option B is the right answer, है ना? So don't forget this is 650 centimeter cube. This is 650 centimeter cube. काम करता हूँ. ठीक है, 650 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, चलिए अगले पे बढ़ते हैं डियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 ही होगा ना? हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 और सी पेज से है ये क्वेश्चन. आप इसको करने के लिए डियर यू कैन टेक 1 to 1.5 मिनट. ओके, सो वीडियो को पॉज कीजिएगा, फिर सॉल्यूशन देखिएगा. ओके, नाउ आई एम कैलकुलेटिंग द टोटल हेड डिफरेंस. इफ आई एम कंसीडरिंग दिस एज रेफरेंस, तो हेड डिफरेंस एट ए इज 1 + 8 + 2 11, and at the B exit point is 1 + 8 9 11 and 3 14, means the total head difference. Okay, here datum has it 9 and potential head is 5, and here the datum head is 0 but potential head is 11, so total head difference is 9 and 3, and these 3 meter of head difference is occurring after traveling a distance of 9. Okay, so now upward seepage is there, so saturated density has to be subtracted from the density of water, a little bit of water, because effectiveness I have to take. So directly I am writing now. So sigma xx going to be equal to gamma sub into height. How much distance we have to be travel from xx to here? It's 8 meter, and 3 is the head difference for 9 meter, and for 8 meter how much is left, that we can calculate. So you are going to get your answer as 107.68 kilonewton per meter square. So just check it the calculation, and option C I would like to go with. Okay, अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन. तो इसको जरा आप कीजिएगा अच्छे से दिल लगा करके. कोई डाउट हो तो मेरे से पूछिएगा. ओके, चलिए नेक्स्ट इज फ्रॉम एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग. ओके, कराता तो नहीं हूँ मैं, बट सॉल्यूशंस है मेरे पास और क्वेश्चन मुझे लगा कि अच्छा है, सो इट शुड बी आस्क्ड. सो यू हैव टू टेल मी द टोटल हार्डनेस ऑफ द वाटर सैंपल. ठीक है, मजे की बात यह है कि सारे के सारे आयंस का कंसंट्रेशन आपको गिवन है और हर एक का एटॉमिक वेट भी गिवन है. वैसे ये सब एटॉमिक वेट आपको पता होने चाहिए, है ना? मुझे अभी तक याद है ये सब एटॉमिक वेट, बट आपको अगर गेट की यही बात अच्छी है कि गेट अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको देता है, सो दे आर आल्सो प्रोवाइडिंग यू दी एटॉमिक वेट्स. ओके, सो देखते हैं इसको. सो टोटल हार्डनेस निकालना है. अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको आप कीजिए और वीडियो को पॉज कर दीजिए, और मुझे लगता है कि 50-60 सेकंड बाद आपको अपना वीडियो पॉज करके इसको सॉल्यूशन को देखना चाहिए. सो दिस इज टोटल हार्डनेस.
इज इक्वल टू, एक एक करके सबको ले लो, mg प्लस कैल्शियम के कारण आएगा प्लस और कौन करेगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम है ना, sodium, chlorine and carbonate, they are not responsible for the hardness. तो तीसरा would be aluminium. I think आपका ये सब्जेक्ट चल भी रहा है आजकल हार्डनेस के ऊपर. So okay, so this is the total hardness. This is the total hardness. And this is how much, mg2 plus कितना दे रखा है आपको, it's 30. इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा 50, ठीक है, mg का एटॉमिक वेट ये हो जाएगा, प्लस कैल्शियम का कितना हो जाएगा, कैल्शियम का 40 और एल्युमिनियम का वेट कितना हो जाएगा आपका प्लस, ठीक है, एंड दिस इज कितना 3 ओनली, ये एल्युमिनियम है ना, और ये 40 है, 40/2. देखो ये मैंने डिवाइड किया है वैलेंसी से, यहाँ पे वैलेंसी 2 होगी, यहाँ पे वैलेंसी 2 है, यहाँ पे वैलेंसी कितनी है 3 है. सो दिस टोटल हार्डनेस इज कमिंग आउट टू बी 242 मिलीग्राम पर लीटर. ओके, 242 मिलीग्राम पर लीटर. ओके, चलिए. ओके गाइस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम highway engineering, and here you have to calculate the length of the vertical curve. Okay, so length of the curve it's simply given by total change in the grade, total change in grade divided by कितना हो जाएगा, permissible rate of change of grade of change, permissible rate of change of grade per change. So this is equal to -3% minus plus 1% divided by 0.1% into 20, it's equal to 800 मीटर. ठीक है, सिंपल है. लेंथ ऑफ द वर्टिकल कर्व सिंपली गिवन बाय टोटल चेंज इन ग्रेड. कितना टोटल चेंज कितना है, 3 डाउन साइड है, followed by 1 upward. So total is change is 3 और ये 1, ये टोटल चेंज आप देखोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा. एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर गिवन टू यू हियर. ओके, सो लेंथ ऑफ द कर्व इज 800 मीटर. चलिए, yes, this is also from traffic engineering. An observer count is given to you 360 vehicle per hour
at a specific highway location, and the probability of 2 or more vehicle will arrive in 3 successive time interval is. Okay, इसके लिए मैं कहूँगा कि अच्छा आपको दे क्या रखा है, आपको व्हीकल डेंसिटी दे रखी है, इट्स 360 व्हीकल पर आवर. ओके, ये आपको डेंसिटी दे रखी है. और अगर आप इसको व्हीकल पर सेकंड में करोगे तो 3600, इट्स 0.1 व्हीकल पर सेकंड, मतलब हर एक सेकंड में 10% ऑफ द व्हीकल इज गोइंग टू पास. ओके, नाउ यू नो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी इज गिवन बाय lambda t की पावर n e raised to the power minus lambda t over n factorial. Now you have to find the probability of 2 or more. So better find the probability of with no vehicle, with one vehicle, and subtract the summation of these two probabilities from 1. Okay, and they are asking 3 successive time interval, so we have to multiply the same 3 times. तो जैसे वही करते हो हाइड्रोग्राफ वगैरह में करते हो, तो क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 व्हीकल इन टाइम 20 सेकेंड आप निकाल सकते हो. लैम्डा यू कैन पुट व्हीकल पर सेकेंड, t is 20 सेकेंड, n is 0, e की पावर माइनस लैम्डा t अपॉन 0 फैक्टोरियल इज 1, so it's coming out to be 0.135. Similarly, probability of one vehicle in 20 seconds, so this is 0.271. Okay, so for 2 or more vehicle, for 2 or more vehicle, okay, means p is greater than equal to 2, so it is 1 minus p naught plus p1. So this I can calculate. So this is coming out to be 0.135 minus 0.271, so it's coming out to be 0.594. Now the for 3 successive time interval, for 3 successive time interval, so this is coming out to be probability of greater than equal to 2 का whole cube. So 0.594 का cube is coming out to be 0.209. रिकॉर्डिंग का चलो ये तो फायदा है कि सेशन काफी तेज हो रहा है, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन कर रखी है एंड ऑल, और आप लोगों के सामने होता हूँ थोड़ा स्लो हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे उम्मीद होती है कि आप कोई ना कोई करके मुझे जवाब बताओगे. ओके, चलिए, हर एक चीज के अपने फायदे नुकसान दोनों ही होते हैं. Yes, now the fluid dynamics, or you can say flow measurement, और आप इसको कह सकते हो flow measurement, or you can say it is the application of Bernoulli's theorem, है ना, orifice meter and venturi meter. So आपको discharge सेम रखने के लिए ratio of pressure drop निकालना है डियर. So pressure drop discharge is how much? It is CD orifice k times of under root 2 g h of orifice, and same discharge CD venturi meter k 2 g h. So this is going to give you the pressure drop. So if we are simply going to equate both of them, and you know the value of CD, you know the value of venturi meter CD, so it's 0.61 k root 2g into h naught is equal to 0.98 k root 2g into hv. Okay, so this and this would be cancelled. So आपसे किस चीज का रेशियो पूछा है, आपसे पूछा है venturi to orifice. Okay, स्क्वायर कर दोगे. So you are going to get option number A. You are going to get option number A. सॉल्यूशन में हाइड तो नहीं कर रहा हूँ, बस यही है. थोड़ा सा अगर आपको देखना है तो लो मैं इसको गायब कर देता हूँ. So 0.98 k root 2g hv की पावर 1/2. So k root 2g will be cancelled. So hv upon h naught की पावर 1/2 is this one, and squaring both side you are getting this, isn't it? चलो, तो नौवां क्वेश्चन भी हो चुका. अच्छा, ये है आपका कैनाल डैम डिजाइन.
सो डैम डिजाइन के लिए आपको दे रखा है द बेस विड्थ ऑफ द सॉइल ग्रेविटी डैम इज इतना एंड द मटेरियल ऑफ द डैम हैज ए स्पेसिफिक ग्रेविटी जी वैल्यू आपको दे रखी है 2.56 एलिमेंट्री प्रोफाइल इग्नोरिंग अपलिफ्ट एंड व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट अलाउएबल हाइट। तो दोस्त ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही है। तो अलाउएबल हाइट जो होगी दैट इज b अंडर रूट g एम्पिरिकल रिलेशन। So b is 25 meter, g is 2.56, so it's 25 into 1.6, so it's coming out to be 40 meter. Simple as it. Uplift को ignore कराया तो directly we can use this condition. Is it clear here? तो ये जो 10 क्वेश्चन थे, these are numerical form questions. Now the remaining questions are objective theoretical one. Okay. तो वो बिल्डिंग मटेरियल थोड़ी लिटरेचर आपको पता होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग का, देन माय डियर फ्रेंड यू गाइस विल बी एबल टू सॉल्व दिस। ओके, आई होप यू लाइक दिस न्यूमेरिकल सेशन एंड देयर आर 5 मोर क्वेश्चंस एंड दे आर 10 सेकंड्स क्वेश्चन। आपको पढ़ना है और टिक लगाना है, पढ़ना है और टिक लगाना है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11, कंसीडर द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट ऑफ ए हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट, सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, वाटर, मिनरल एंड केमिकल एडमिक्सचर। So high performance concrete के लिए which of the following constitutes are relevant? Which of these constitutes are relevant? जल्दी, तो ये आपका केबीसी टाइप क्वेश्चन है, फास्टेस्ट फिंगर सबको इंक्लूड कीजिए। जल्दी, yes, time up. So high performance concrete is given by my dear friend all these things, सब कुछ चाहिए। सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, सीमेंट को छोड़ नहीं सकते, फाइन कोर्स, वाटर, मिनरल और केमिकल एडमिक्सचर्स आर आल्सो देयर। So high performance concrete needs all these ingredients. Okay, option A is correct. Now the age of log of timber can be estimated by, again from building material, the age of log of timber can be estimated by, बताइए। So this is number of annular ring, this is number of annular ring। क्या आप बता सकते हो कि टिम्बर का लॉग कितना पुराना है? चलिए, slack time in part analysis, slack time in part analysis is a minimum, can never be less than 0, can never be greater than 0, or it's always 0 for critical path. So here as well the answer is it is always नहीं, slack time में slack time को आप क्या डिफाइन करोगे? slack time को आप क्या डिफाइन करोगे? Yes, it's minimum for critical path। एक बार आप भी इसको डबल चेक कर लीजिएगा, बट आई थिंक इट्स मिनिमम फॉर क्रिटिकल पाथ। ए और डी में मेरे को कंफ्यूजन है फिलहाल, आई वुड लाइक टू गो विद ए। ठीक है, बाकी कुछ होता है तो मैं आपको अगली क्लास में कंफर्म करूंगा इफ देयर इज एनी अदर चेंज इन दिस ऑप्शन। ओके, चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन, द रनवे ओरिएंटेशन इज मेड सो दैट लैंडिंग एंड टेक ऑफ 1 अगेंस्ट द विंड डायरेक्शन, अलोंग द विंड डायरेक्शन, परपेंडिकुलरली, तो सबको पता होगा। रनवे इस तरीके से डिजाइन किया जाता है दैट लैंडिंग एंड टेक ऑफ करते वक्त विंड आपकी हमेशा हो अपोजिट टू दी डायरेक्शन। लैंडिंग कर रहे हैं तब भी विंड आपको फेस करना चाहिए, जब आप टेक ऑफ कर रहे हो तब भी विंड आपको फेस करनी चाहिए। लैंडिंग के दौरान लॉजिक सबको समझ में आता है कि ड्यूरिंग द लैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग व्हेनेवर योर क्राफ्ट इज लैंडिंग, सो एयर इज गोइंग टू प्रोवाइड यू सम फ्रिक्शन ड्रैग and it is also going to act as a brake, jaldi retardation hoga and less length of runway would be needed। but whenever my aeroplane is going to be take off, तो हमें लगता है कि this time we need the help of the wind। no, we do not need, in fact wind is going to help us if it is against us, because क्या होता है कि जब wind सामने से आती है और आप टेक ऑफ करते हो अपने जहाज को, तो अपोजिट साइड ऑफ विंड से आपके क्राफ्ट को कंट्रोल मिलता है एंड अपलिफ्ट मिलता है। सो ड्यूरिंग द टेक ऑफ इवन योर डायरेक्शन शुड बी अगेंस्ट द, इज इट क्लियर? चलो
In case of stratified soil, the best equation that can be adopted for computation pressure distribution. Stratified के लिए dear we are always going to be Westergaard equation. Okay, ठीक है, Westergaard equation. ठीक है, चलिए दोस्तों, थैंक्स अ लॉट। आज के लिए 15 क्वेश्चन मैंने आपको करवाया, 10 न्यूमेरिकल एंड 5 ऑब्जेक्टिव, क्विक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, 1 मार्क्स समझ लीजिए, शुरू के 10 क्वेश्चन को आप 2 नंबर समझ लीजिए एंड इसको 1 मार्क्स समझ लीजिए। ठीक है, चलिए तो बताना कि कितना मार्क्स आया आपका 25 मार्क्स में से। ठीक है, कंसिडरिंग +1 और +2 और -1/3 और -2/3। ओके, चलो कल फिर मिलते हैं डियर, टेक केयर। और अगर आप इंटरेस्टेड हो हमारे प्लस के प्लान में तो नो कॉस्ट EMI ऑप्शंस आर अवेलेबल and you guys can use the code AISH10 and grab 10% off. And iconic की बात करूँ तो here as well no cost EMI options are available and here as well you guys can grab this deal at instant 10% off if you are going to use AISH10. Okay, चलिए टेलीग्राम चैनल ऑफिशियल आप लोगों का ही, आप हम इसमें आपको भेजते हैं डेली अपडेट्स, नोटिफिकेशंस, अपकमिंग शेड्यूल। एंड थैंक्स अ लॉट। पसंद आया तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं कल फिर से, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।